Health Education Lecture Series. All the listeners of Health Education Lecture Series, I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. As you know, in this lecture series, I am delivering a systematic study of how the life is created from life. And in during this lecture series, Facebook, YouTube, Sabrang radio station, and Radio Pravaz from New Jersey joins us for all these programs. Mostly in Punjabi program, Radio Pravaz joins us, but some of the reasons, technical reasons, they are not able to join today. Ultimately, hope soon they will be joining, and all the listeners of Pravaz radio station will be listening all these programs systematically. We are discussing life of a fetus inside mother's womb. Fetus means whenever we use the term fetus, it means when the child, the new life, is still in the mother's womb. That is known as fetus. During mother's web's life, it passes during two phases. The first one is known as the embryo. The second one is known as fetus. And the fetus stage lasts after 13th week onward up to 40th week when it comes out of the mother's womb. And we are discussing the anomalies of a fetus. What are the anomalies in a fetus which ultimately runs throughout his life sometimes if it is not treated? If it is not taken care of, some of the abnormalities runs throughout the life. And when it starts, some of the abnormalities starts inside mother's womb during the intrauterine life, and during the intrauterine life, the life of the fetus is a safe life because it totally depends upon the mother's health and sometimes the father's genes as well. Some of the problems are related to the genetic character, which are transmitted from the previous generation to the fetus. But some of the problems are created at that time, and most of them are related with the mother's health. And some of the problems, though all the problems now transmitted to the fetus are because of this mother's reasons, but some of the problems are created later on due to some problems in the communication between the mother and the fetus. And the communication between mother and the fetus is the placenta, is the umbilical cord. And sometimes these type of structures have some of the abnormalities, and the development of the fetus in the mother's uterus is not going normally. And when it is not going normally, the development of the fetus, it's not going normally, it means it is defective. And from those defects, some of the defects we have already discussed are the physiological defects, means they are overcome or they are cured over time automatically, but some of them needs a medical interventions. And the medical intervention in these anomalies sometimes is helpful and sometimes it is not helpful. But nowadays, as we know, the medical science has advanced for these things so that they can correct the anomalies of the fetus in a timely fashion. And when they see the sign and symptoms are coming back, and most of them are already diagnosed when the fetus is in the mother's womb. And out of those anomalies, we have already discussed about the anomalies in the heart.
that we have discussed regarding the foramen oval mainly, and the problems in the SA node, AV node, or all these branches of that one, and sometimes the valvular problems, valves of the hearts, they are defective, they are not flexible, they are stretched out, they are fixed and not movable. Some of these type of problems comes into the valves of the heart, and that we have already discussed in all these programs, that what happened if this thing comes up, and sign and symptoms and all that. Okay, and these sign and symptoms mostly, nowadays we are able to see those sign and symptoms in the mother's mouth, but most of them we see when the child is born. And under some conditions, when the fetus is suffering from these kind of anomalies in the mother's valves, there is a stillbirth. And sometimes the after birth, the child is devoid of normal development in its normal structures, in its normal functionings of the body. So these type of conditions occurs, and we are discussing all these things systematically. And all these anomalies, not only in one organs or in one part of the body or one system of the body, all these anomalies are scattered throughout the body from head to heel, structurally and also the functionally. When the structure is not normal, automatically you can assume that the function of the body will not be normal. If nose is not formed, structurally formed normally, definitely you will feel some respiratory problems. If the eyes are not formed normally, definitely you will be having any vision problems. In this way, we are systematically discussing all these things, that what are the anomalies we should be care of, we should take care of, that these are the anomalies may occur, maybe 1 in 1000, maybe more than that. If these kind of conditions occurs regularly and mostly, depending upon the environment, depending upon the diets of the pregnant women, depending upon the genetic character at that time, that is attached to the fetus as well. So these type of things we have to consider, and we have to take care of that. And here in these programs, I am systematically describing all these things. So the second thing which I have to discuss today, that is the hydrocephalus. Hydro means water, cephalus means head. Means, in short, there is a excessive fluid inside the head. And that excessive fluid, wherever there is excessive fluids, there are three reasons. Three reasons. One reason is the fluid production is excessive. Second, somewhere fluid has been blocked to circulate, because everything is moving inside the body, and even the CSF, the cerebrospinal fluid, it's moving inside the head and the vertebral columns, and also it has a direct effect on the body of the fetus at that time. But if and the other third one is the blockage somewhere, blockage. And the blockage, we are separating this part, the blockage, because blockage in one part of the has scalp, in one part of the meningeal organs, may produce a different kind of hydrocephalus. But when it's generalized, then the whole head represents the symptoms of the hydrocephalus. And ultimately, there are many more other things which are related to this hydrocephalus, which we see in a fetus when he borns. But nowadays, as I told you, there are some means that we can diagnose even after 15th week of pregnancy.
even 15th week of pregnancy. Now there are devices developed by the medical science that we can recognize and we can diagnose the hydrocephalus in the fetus. And same way, if we are able to diagnose that, we are able to diagnose the causes of that hydrocephalus, and some of the causes which are not genetical, which are some types of obstruction in the flow of CSF, then we are able to correct that as well. Some of the causes which are related to the mother's health, yes, we are able to correct that, so that the normal food materials are supplied to the fetus, and a fetus is developing in a normal way. So if ever there be any obstructions, and some of the problems which create hydrocephalus later on, these are the injuries and artificially created mass, that's a tumor inside the brains, or injury during the birth of the child. Sometimes it causes it was not having in when the child was in the mother's womb, the fetus, but when it comes out from mother's wombs, sometimes these conditions appear later on. So all these causes for the hydrocephalus, we have to discuss that how it happens, what how we can correct all those things. The first thing we should know about, that is the blockage. That is the blockage of CSF. CSF, cerebrospinal fluid, a type of liquid which is flowing from the brain to the vertebral column, and ultimately it facilitates the nerves, the central nervous system, to move freely and to function normally, to control all the organs of the body inside. And when this fluid is not flowing freely, and somewhere it is obstructed, definitely that portion may cause the collection of the fluid somewhere on one side of the head, or at part of the head, in this way. But if this is from the centralized caused, this CSF may be a generalized problems. Means CSF pressure is increased in the brain, CSF pressure is increased in the vertebral column, that we are now able to judge that to diagnose that after taking CSF from the fetus, from the born child as well. So in this way, we can diagnose the hydrocephalus conditions in a newborn, and also from the mother's womb in the fetus. So in these conditions, we have to first of all know that the first thing I told you, the blockage. Somewhere it may be blockage of the CSF, cerebrospinal fluid, a common fluid which is flowing from the brain to the vertebral column, and it is taking out the stuff from the brain organ, just like the cerebrospinal fluid is moving to the vertebral column. There is the cerebrum, cerebellum, mons, medulla oblongata. There are many more other things in the brain, and they are regularly sucking the fluid, taking the minerals and food materials from that, and also they are throwing out their garbage. That garbage is also thrown out into the CSF, cerebrospinal fluid, and that moves freely inside the brain and the meninges and also the ventricles. The ventricles are just like the common spaces to be used by the all the organs inside the skull. They use it. They use it for their wastage. They use it for the absorption. Absorption means absorption of food materials, absorption of blood, which is being supplied to the by the carotid arteries to the brain, and that has oxygen, that has food materials, all these things. They absorb it from that one, and also they send back their garbage into the same CSF, and the problems and all that, the normal things, whatever it is, whatever it's normal or abnormal, whatever it is,
it is moving into the cerebrospinal fluids. That is why, under all conditions, whenever there is any problem concerned with the brains or the vertebral column, the first thing we try to diagnose is the CSF, cerebrospinal fluid. We diagnose it. And then after that, sometimes there are reasons behind that in spite of the blockage. First thing I have discussed, that there is a blockage may be partial on one side, blockage may be generalized, which is not going through from this skull or the scalp to the vertebral column, so freely moving the whole cycle of the CSF is from the brain to the vertebral column, and from the vertebral column to the brain it's moving freely. So blockage may be partial on one side, on one points, but this blockage may be the generalized. The second thing is production. There may be excessive production of CSF. It's a regular production of the this fluid, and it is revised about 3 times in a day. You can say this whole fluid from the brain to the vertebral column, from vertebral column back to the brain, approximately it is changed into 3 times in a day. This is assumed that the whole fluid has been converted, has been gone and come. Okay? But it is not that the whole fluid will go through the cerebrum, this cerebrum, and the whole fluid will come to the vertebral column. It's regularly, just like the traffic goes out in the roads. 8, 10 cars are going north route side, and the 8, 10 cars are coming from south to north. The same way, this fluid is moving and coming back, moving and coming back, and it is assumed that the whole circulation is approximately 3 times in 24 hours. So, if something is happening to this normal procedure of transforming the cerebral fluid to the vertebral fluid, from vertebral fluid to the cerebral fluids via the foramen magnum, then it may create problems. Wherever it is collected, it will project out the bones of that structure. Suppose if this is you can say the collected in the vertebral column, there are problems in the vertebral columns, and we will discuss later all those things: curvature of the bones, and sometimes scoliosis of the vertebral column. And the same way, when this collection is in the brain, in the skull, then it is named as hydrocephalus, though it is connected with that. But even then, we are visualizing up front immediately that the head is enlarged. So this way, then this third thing is, first we discussed the blockage. The second thing, we discussed the somewhere partial localized blockage. The third thing, that the cerebral spinal fluid is produced more. And the fourth thing, we are discussing the cerebrospinal fluid is increased in a normal size. And also, all these conditions, temporarily or in one portion, may be caused by the swelling, may be caused by the local injury, may be caused by the tumor produced somewhere in the local parts. And wherever this local parts, it's narrowed down the lumen inside the canal, lumen inside the neural canal. That neural canal is known as that canal which runs through the vertebral column, and CSF moves through that from the head to the vertebral column. So if ever there be any problems in that area, in any area, then it causes the pressure increased, then it causes the enlargement of that particle portion, or enlargement of the whole sum, the structure, that is the brain as well as the vertebral column.
in this way. So we will discuss scoliosis as well. We will discuss the cerebrospinal, hydrocephalus as well. So in this conditions, so they reduced maybe because partially reductions or less absorptions or excessive absorption into the tissues. Then, then the second condition, the tumor that cause the partial things. Generalized, any injury to the mother's abdomen or any deficiency in the food materials that it is not absorbing the normal minerals, because the minerals have a quantity to maintain the balance of cerebrospinal fluid in the fetus as well as in the normal human beings. Salts, minerals, they have the tendency to absorb the water, to absorb the liquid, and maintain a level that this much should be the, just like we say the amniotic fluid. It should be from 800 milligrams ml to 1200 milliliters. A normal within that range. If it's less, it produces problem. It's more, it produces problems of the fetus. The same way, the cerebrospinal fluid has a normal quantity, and when this normal quantity is increased or decreased, it causes some types of problems. But we are discussing the hydrocephalus, water, excessive means just like the temperature we say. The temperature means when it is exceeding the normal acceptable limits, 98.4 degrees centigrades. After that, we say the temperature, fever. But before that, we do not do that. Same way, same way, we say the hydrocephalus, when it is increasing its limits. And when it is increasing its limit, it's come in that one. And then all the organs concerned or interrelated with each other by that water, by the passing of that water directly, they are affected. And we have just told you that the brain as well as the vertebral column, they are connected to each other for a magnum, and that portion is known as a neural canal. And if the fluid is generalized increased, if the fluid is generalized decreased, that affects the functioning of brain as well as of the vertebral column. That changes the structure of the brain as well as the structure of the vertebral column. So then, under such conditions, as I told you, the total volume of the CSF is turned 3 times every day in a circulation. In a circulation, 3 times. But if this speed, you can say, the speed of this change is fast, then it also causes problems. When the speed is slow comparatively, it invites the infection as well. So many things happens. We will discuss time to time in this chapters. So this is so these are the conditions by which this hydrocephalus is caused. Okay, uh, sometimes sometimes it may be non-communicating type of hydrocephalus, which has no connection with the other portions. It is a localized type of things, and the localized type of things produces localized symptoms. And localized symptoms uh, are the bulging out of the any organ wherever there is a blockage. The back portion of that area is bulged out. Sometimes you see some tumors in the backside in the vertebral column. Sometimes you see a bump in the scalp on one side, and all other generalized functioning is normal. All other skull functions are normal. But when it is generalized, then it creates or produces symptoms which are generalized symptoms. And so for this one, I would like to tell you what are the causes. The causes.
Causes, some of the causes are congenital, as I told you, from the genetic type of things. And as you know, we have discussed many times, there are 23 pairs of chromosomes, and every chromosome has thousands of genes. And every gene is differentiated from each other because of a different type of protein coated on that, and functions differently, behavior differently from the others. Even the twins peoples, they do not behave alike. Their behavior is different from each other's. It indicates, it indicates that the genetic genes has the individual characteristic in any person, wherever, though they are the same father, the same mother, but depends upon some of the activated genes that are different from the other siblings. They will indicate it individual by the functions, by the structural formation of the body as well. The same way, this hydrocephalus, sorry, hydrocephalus is also related to the congenital defects of this kind of genes problems. After that, after that, after that, birth injury. Genetic characters mostly affect the fetus, even in the mother's womb. And we can see, we can recognize, and we are able to recognize this thing even in the mother's wombs. There are now devices that we can check it, that there is a large lines of the scalp, large dimensions, dilatation of the skull. So that in this way we can diagnose it even during the mother's womb's life of a fetus. After that, when a child is born, when a child is born, the first incidence or the first causes for this one is the birth injury. Mostly mostly the doctors are capable now, even our in our antenatal clinics, we are able to diagnose the disproportions. That disproportion is the pelvic disproportions. The pelvic disproportion means we have a normal measurements. We have a normal measurement of 10 centimeter circumference of the newborn baby at that time, at the time of the birth. The normal circumference of the head is 10 centimeter. But if it's enlarged, and we have checked it, we have diagnosed and recognized it before the delivery due dates, then we can suggest the alternative means for that, that the head is large and it is not possible for the normal delivery, vaginal delivery, you can say. And especially for those who are nulliparous, the first time they are pregnant, and first time they are going to give birth to the child. Okay, primipara, primigravida. Gravida means pregnant, first time pregnant. Primipara, the first time it's going to give birth to the child. And under those conditions, even the minimum enlarged head can create problems. And ultimately, if there are no other alternatives than to the normal vaginal delivery, under those conditions, if the medical facilities are not available there, under those conditions, sometimes a birth injury to the skull bones may occur. And relatively, the injury may cause some changes inside the brain matter, cerebrum, cerebellum, mons, medulla oblongata. All those things may be damaged, and there may be a bleeding inside that, and that may produce stenosis, that is known as closure of the circulations,
stenosis of the blood vessels, stenosis of the tube, narrowing of the tubes that transmits the flow from here to there, there to here. In this way, that may cause the uh, you can say the excessive collection of the cerebrospinal fluid on one side in this head. So then it is called the hydrocephalus. So this is called the second cause when a child is born because of the pelvic disproportions. And the dimensions of the pelvic disproportion, I told you that it should be not less than 10 centimeters from, and this is measures from the from ischium to ischium. It dimensions so that pelvic bones can move, because the pubic bone is in front, which is united with each other, and there is a round shape of the pelvic brim. And then, if the round shape of the pelvic brim gives space about transverse diameter, it gives space 10 centimeter, then it's a possibly normal delivery is possible. But if it's a smaller dimensions, or if the head is larger than the 10 centimeters, then it may create problems. So this is the other thing, that the mental injury, skull injury during the delivery may cause these kind of conditions in a child. So today, our this lecture, this English time is finished, and we will convert into the Hindi medium. Because today the Punjabi media, we attach to these Pravas radio station, they are not ready today because of some technical problems. In this way, we are discussing this lecture. Next, I think tomorrow they will be able. If they will be able, then we will go into the Punjabi media, so that all the Punjabi listeners, they can listen what I want to say about the hydrocephalus. And the second thing, now we will convert it into the uh, Hindi media. These are, I hope all of you will adjust with me, because these are the days of vacations, end of the year and coming of the New Year's. In this way, all the peoples are busy in a different way, different style of their lives, not the routine life of their lives. In this way, some of them are not getting free time to listen all these lectures, and my purpose is to give this knowledge to each and every persons. And if I see the peoples are busy, then there is no purpose of for me to deliver all these lectures. So therefore, today we will just stop this one after this Hindi lectures. तो हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ आपका रोजाना का शो। कभी कभी इसमें रुकावटें आ जाती हैं, इसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल हालात होते हैं, कुछ जनरलाइज्ड हालात होते हैं, तो उन जनरल हालातों की वजह से कई बार प्रोग्राम मिस हो जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं इन प्रोग्राम को रोज़ाना आपके लिए पेश करता रहूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिटेल है जीवन से जीवन की उत्पत्ति की। जीवन से जीवन की उत्पत्ति जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत लंबी बात है। पैदा होना, पैदा होने के बाद डेवलप होना, डेवलप होने का भी फेज़ हमने कह दिया कि माँ के पेट में कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है, वहाँ कौन-कौन इसको सहयोग करता है, वहाँ कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स इसको हो सकती हैं, माँ के पेट से बाहर आने वक़्त इसके साथ क्या-क्या होता है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप एवरी डे क्या होता है, ये सब बातें मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। और क्या होता का तो मतलब ये है, होता है तो होता रहे, नहीं, क्योंकि इसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं। हमारी
प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं, इसलिए हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो इस नॉर्मल चलते अगर नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचर के तौर पे चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। लेकिन बावजूद इसके भी इस रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन प्रोग्रामों में कि उसके बारे में अगर हम जान ही पाए हैं, तो फिर करना क्या है? क्या करना चाहिए? तो इसीलिए इन प्रोग्रामों को मैं सिस्टमैटिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि हर आदमी सुनने वाला ये जाने, हर आदमी ये बात जाने कि भई इसके रास्ते में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और जो मुझे जाननी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए कब डॉक्टर को कंसल्ट करें, कब हम उसके लिए तैयार रहें और उस हालात में शायद हाँ जी, सो मैं समझता हूँ कुछ प्रॉब्लम इस स्पीकर में भी आ रही है। ये भी शायद सो ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्कस करते-करते हम लोग वहाँ पहुँचे थे कि बच्चे की डेवलपमेंट माँ के पेट में जब हो रही है, तो उस हालात में माँ के पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को आती हैं, जहाँ पर उसका अपना कोई कसूर नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जिनको हम बोलते हैं कि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स वो हैं जो वो माँ-बाप से लेकर आता है। और उसके बाद जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है मैंने आपको बताया कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में जब वो माँ-बाप के मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं। फिर 46 आपस में एक-दूसरे में फ्यूज़ कर जाते हैं तो फिर 23 हो जाते हैं। फिर यहाँ से एक नई बनतर जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। जब वो बनतर बीज पड़ा रहे तो पड़ा रहे, कुछ नहीं होता उसको। बीज के साथ जब मिट्टी पानी मिलता है तो फूलना शुरू हो जाता है, नया जीवन शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह ही ओवम या स्पर्म अलग-अलग रहते हैं, तो उस हालात में उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जिस वक़्त वो आपस में मिलते हैं, तो उस वक़्त उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। और इन चेंजेस की बदौलत बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है इस जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। और उस जीवन के रास्ते में चलते-चलते जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो है कि माँ के पेट में रहते हुए बच्चे के शरीर में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और उनको हम बोलते हैं एनॉमलीज़, एनॉमलीज़ ऑफ ए चाइल्ड, कि बच्चे के शरीर में कौन-कौन सी एनॉमलीज़, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और उन्हीं में से जो प्रॉब्लम आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, वो है हाइड्रोसेफलस। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, सेफलस का मतलब होता है सिर। सिर में पानी का ज़्यादा हो जाना। लेकिन सिर में पानी का ज़्यादा हो जाना केवल सिर में ही नहीं होता। इसका एक लिंक है, लिंक के साथ भी ऐसा होता है। और ये जो लिंक के साथ अगर होता है तो इसका मतलब है कि अगर सिर में कोई प्रॉब्लम आएगी, फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो डेफ़िनिटली दूसरा जो जहाँ-जहाँ भी इसका लिंक होगा, वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होगा। तो इसका लिंक किसके साथ है? वो है रीढ़ की हड्डी के साथ। रीढ़ की हड्डी के साथ इसका लिंक है, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टेब्रल कॉलम अलग-अलग हड्डियों का बना हुआ एक लंबी लाइन है और उसके बीच अंदरों-अंदर एक कैनाल बनी है, एक सुराख है, उसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं। ये न्यूरल कैनाल और रीढ़ की हड्डी का ब्रेन के साथ स्कल की जो बोन्स हैं हमारी, उनके साथ जोड़ है। और उस जोड़ को जो सुराख है स्कल में, उसको हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम। और जो वर्टेब्रा, क्योंकि ये सभी छोटे-छोटे पीसेज़ हैं जिसको हम वर्टेब्रा बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के। और वो जो वर्टेब्रा स्कल के साथ मिक्स अप होता है या अटैच होता है, जॉइंट बनता है जैसे ट्रैक्टर ट्राली के साथ
हम जोड़ देते हैं, इसी तरह ही ये जो उसमें के साथ जुड़ता है, तो वो इसको हम बोलते हैं एटलस वर्टेब्रा। उसकी हुक उसी तरह की बनी हुई है जैसे ट्रॉली की होती है ना। ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ जाती है, तो उसी तरह वो फिक्स हो जाता है। और अब इसका मतलब कहने से मेरा ये है कि अगर ब्रेन में किसी चीज़ की ज़्यादती हुई, तो उसका डायरेक्ट लेन-देन है रीढ़ की हड्डी के साथ। इसका मतलब कि रीढ़ की हड्डी में भी वो चेंजेस आएँगी, अगर ये फ्लूइड पूरे का पूरा है। तो अब क्या हुआ? अब ये सब जब हमने जान लिया, तो मतलब ये हुआ कि ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमेशा ही हमेशा ही अगर सिर में ज़्यादा हुआ, तो ज़रूरी नहीं रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि पा इसका कारण जो है, वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। पार्शियल रुकावट, टेम्परेरी तौर पे किसी हिस्से की रुकावट भी हो सकती, पूरे के पूरे की नहीं। एक तो ये है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना ज़्यादा, क्वांटिटी में ज़्यादा बन रहा है। जैसे हमने आपको जब ब चलते-चलते ब एमनियोटिक फ्लूइड की बात आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि भई एमनियोटिक फ्लूइड जो है, उसकी नॉर्मल क्वांटिटी 800 मिलीलीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसकी 1200 मिलीलीटर है। इस हिसाब से अगर ये कम होता है तो भी प्रॉब्लम बच्चे को आती है, अगर ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम बच्चे को आती है और बच्चे की डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह सीएसएफ की एक अपनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से कम होना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस क्वांटिटी से ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस क्वांटिटी का रूटीन में दिन में 3 बार पूरा सर्कल मूव करता रहता है। अगर हम देखें कि पूरा जो चेंज होता रहा है, तो अभी तक ये नोट किया गया है कि 3 बार 1 दिन में ये जो फ्लूइड है, टोटल वॉल्यूम है, ये इसमें चेंज होता रहता है। और अगर 3 बार होता रहता है, तो फिर तो ठीक है। अगर 3 बार नहीं फ्लूइड मूव ऑन हो रहा है, अगर हम टाइम टू टाइम उसको फ्लूइड को चेक करते हैं और उसकी जो कंस्टीट्यूएंट्स हैं, वो चेंज करते हैं, तो पता चला कि ये मूव करता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं ब्लॉकेज है। अगर ऐसा नहीं होता, तो स्लो मूवमेंट्स कह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बार चेंज होता है, तो फास्ट मूवमेंट कह सकते हैं। उससे भी जो आदान-प्रदान है, बीमारियों का आदान-प्रदान है, जैसे जो उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के तत्व हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, उनका होता रहता है। और उसी के हिसाब से ही इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ, वो पहली बात तो आई ब्लॉकेज की, कि ब्लॉकेज पार्शियल हो सकती है, किसी एक हिस्से में हो सकती है और जिस हिस्से में हो जाती है उसमें जहाँ कलेक्शन हो जाएगी, तो बोन्स सॉफ्ट हैं बच्चे की। माँ के पेट में फीटस है, बाहर आया है, तो भी सॉफ्ट है। उस हालात में वहाँ पर बल्ज आउट होना शुरू होगा। एक पोर्शन में जैसे कोई चीज़ पिल-पिल कर रही है, वो इस तरह की होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह ही अगर जनरलाइज़्ड है, तो जनरलाइज़्ड में सिर में भी उसके सिम्पटम हमें मिलेंगे, स्कल में भी सिम्पटम मिलेंगे और रीढ़ की हड्डी में भी हमें उसके सिम्पटम मिलेंगे क्योंकि फ्लूइड अंदर ज़्यादा हो गया। अब फ्लूइड अंदर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? या तो क्या है कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है एमनियोटिक फ्लूइड की तरह ही, या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और या इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। अगर कम है, तो रिड्यूस एब्ज़ॉर्प्शन हो रही है उसकी और अगर उसका एब्ज़ॉर्प्शन होना और फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना, असिमिलेट करना, ये एक प्रोसेस, एक रेगुलर प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन ब्रेन में कोई चीज़ आ गई और उसके वेंट्रिकल्स में जो खाली जगह है, गलियाँ बनी हुई हैं, वो उसमें आ गई, तो अगर तो ये नॉर्मल एब्ज़ॉर्प्शन अंगों में होता रहा और अंगों से वापस नॉर्मल जो वापस आना था वो आता रहा, तो ठीक है। अगर एक तरफ जाने में या आने में कहीं रुकावट हो गई, तो ऑटोमैटिकली ये फ्लूइड किसी जगह रुक रहा है और इस तरह का जो रुक रहा है, वो प्रॉब्लम्स वहाँ पर की क्रिएट कर देता है। अगर पार्शियल हुआ, तो जिस हिस्से में ये फ्लूइड कलेक्शन हो रही है, उस हिस्से का जो फंक्शन है, वो खराब हो जाएगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के हैं, जो ब्रेन से इश्यू होते हैं और वो पूरी बॉडी के अंगों का फंक्शन कंट्रोल करते हैं। और उसी लिहाज से जो अगर हम वो जानते हैं, तो फिर हम ये जानेंगे कि इसकी अगर पार्शियल टाइप से सीएसएफ इंक्रीज़्ड हुआ या ब्लॉक्ड हुआ किसी जगह, तो उस लोकल जैसे किसी की एक आँख की नज़र चली गई, किसी का एक कान से नहीं सुनता, दूसरे कान से सुनता है। किसी का एक नाक बंद हो गया, दूसरा ठीक है। मतलब जिस अंग में, ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कि जिस अंग में भी किसी जगह प्रेशर इसका ज़्यादा पड़ गया, कलेक्शन ज़्यादा हो गई, वहाँ की नर्व का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। और हमें इंडिकेट कैसे होगा? उसके फंक्शन से, उसके फंक्शन से ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये इसका वॉल्यूम का इंक्रीज़्ड होना, वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना या वॉल्यूम का आदान-प्रदान, आवाजाही, ब्रेन से रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ से हड्डी के ब्रेन को होना, अगर ऐसा नॉर्मल नहीं होता, तो मतलब कहीं न कहीं कोई ब्लॉकेज है और स्टॉपेज है। और वो स्टॉपेज मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भी होगी, वहाँ पर ये अपना रुद्र रूप दिखाएगी ही। तो अगर सिर में ज़्यादा होया, तो उसमें सिर का जो साइज़ है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बोन्स अभी पूरी तरह कॉम्पैक्ट नहीं हुई हैं, पूरी तरह जमी नहीं हैं, बोन्स नहीं बनी हैं, उनकी स्यूचर जो आपस में जुड़ने वाली हैं, वो पूरी तरह फिट नहीं हुई हैं, तो सिर बड़ा हो जाएगा। क्रीज़ सिर की जो है, वो साइज़ से बड़ी हो जाएगी। और अगर वो बड़ा हो गया, और उसके फिर और साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा होंगे, जिसको हमने आपके सामने ये रखना है कि क्या-क्या हो सकता है। इसी तरह ही इसी तरह ही अगर रीढ़ की हड्डी में ऐसा कुछ हो गया, तो फिर रीढ़ की हड्डी में जैसे स्कोलियोसिस की बात है, रीढ़ की हड्डी में बाद में देखा होगा कइयों के बड़ा-बड़ा ट्यूमर सा रीढ़ की हड्डी में उभर जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे स्कोलियोसिस वगैरह होता है, बोन में डिफॉर्मेशन क्या होती है या उसके अंदर क्या चेंजेज़ होती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ऐसा होता है। तो इसके ज़्यादा होने से, इसके कम होने से, दोनों तरफ से ही सिम्पटम्स पैदा होते हैं। और वो कुछ एक ऐसी निशानियाँ हैं जो सामने बाहर दिखाई देती हैं, जैसे स्कोलियोसिस की बात मैंने आपसे कही कि रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर होना या रीढ़ की हड्डी के बाहर एक ट्यूमर का ऊपर जाना, ये ऐसा होना शुरू हो जाता है। और सिर के साइज़ का बड़ा होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप रूटीन में जान सकते हैं कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। सिम्पटम क्या-क्या होते हैं बताएँगे आपको। सबसे पहले इनके कारणों की बात, एक तो मैंने ये बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो सकती है, लोकलाइज़्ड हो सकता है, जनरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और दूसरी बात, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है उसकी, उसकी कम प्रोडक्शन हो सकती हैगी। ये सभी चीज़ें जो हैं इसको इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बढ़ाती हैं। और जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और उसकी जो निशानियाँ हैं वो हमारे सामने, अगर पानी एक जगह रुका रहे, कम रहे, तो ऑटोमैटिकली वो जल्दी गंदा होना शुरू हो जाएगा। अगर पानी मूव करता रहे, तो जल्दी गंदा नहीं होगा। और पानी ज़्यादा रहे, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वॉल्यूम उसको हैंडल करने वाला तो हमारे पास उतना ही है। तो इस हिसाब से ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हर तरह हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटी को, हमारे काम करने के ढंग को या शरीर की बनतर को, दोनों तरह से ये इफ़ेक्ट करता है। अगर ये दोनों तरफ से इफ़ेक्ट करता है, तो फिर इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो पहली बात मैंने आपसे ये कही कि एक तो 3 बार दिन में मूव होता रहता है, इतनी इसकी स्पीड है। इससे कम हुई तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम। इसका कहीं रुका हुआ तब भी प्रॉब्लम, जर्नलाइज़ ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, कम एब्ज़ॉर्प्शन हुआ इसका तो भी प्रॉब्लम। सप्लाई कम होगी बाहर को, तो स्टोर में हमारे जगह बच जाएगी ना, तो ठीक उसी तरह ही ब्रेन में ये इकट्ठा हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें रूटीन में जो है हाइड्रोसेफलस के बारे में हमने आपको बताई। अब काज़ेज़ की बात आती है, तो मैंने ये कहा कि कंजेनिटल काज़ेज़ हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं जो माँ के पेट में शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बच्चा ज़िम्मेवार नहीं होता। तो कंजेनिटल में सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि आपका जेनेटिक करैक्टर इसके लिए बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है।
और वो जेनेटिक करैक्टर जो आ रहा है, वो बाप से भी आ रहा है, माँ से भी आ रहा है, जिसके लिए आप अप्रॉक्सिमेटली कुछ कर नहीं सकते। और या उससे पहले हमें ज्ञान हो, तो उसके लिए हम उसका कुछ उपराला कर सकते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि बहुत सी बीमारियों का हम लोग उपचार करने योग्य हो गए हैं, और उनको अगर पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम लेडीज़ को आती है जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसका कुछ ना कुछ उपचार करने के लायक हो गए हैं कि आगे जब इसकी प्रेगनेंसी हो, तो इसको ऐसा ना हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हमने बहुत सारी डेवलप कर ली हैं। तो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स जो हैं, वो इसकी वजह से भी हाइड्रोसेफलस हो सकता है। जीन्स के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स माँ के, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स बाप के, जब आपस में मिलते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर 23 रह जाते हैं। और फिर 23 एक नई चीज़, नई बनतर बननी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि बीज पड़ा हो, तो पड़ा है। सब बहुत लंबा समय वहाँ पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। बीज मिट्टी में जाता है तो मॉइस्चर चूसता है। मिट्टी, पानी चूसती है, और उससे इसके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है, और ये बढ़ना शुरू हो जाता है, दरख्त बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह ही ये जो जीन्स हैं, आपस में मिले, फ्यूज़ हुए, नई प्रोडक्शन फिर स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म बाहर रहें, कुछ नहीं होता। ओवम बाहर आके मेंसेस में निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं, तो नया जीवन बनता है। और उस नए जीवन के बारे में हम कह रहे हैं कि अगर उसकी बनतर, उसकी मिट्टी में, उसके बीज में, उसके जीन्स में कुछ खराबी आ रही है, तो उसको आप क्या कीजिएगा? कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो हमारे जीवन में हमारे सामने आ जाती हैं और हमारी प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कॉन्जेनिटल कारणों से भी हाइड्रोसेफलस हो सकता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होने से पहले भी हम कर सकते हैं एक बात। एक तो जीन्स की बात हमने कर दी जो माँ-बाप से आ रही है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है ये है कि मैंने आपको कहा कि फ्लो का जो आना-जाना है, वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसका को जो कंटेंट, जो कंपोज़िशन है, वो नॉर्मल है। मान लिया जाए पानी का फ्लो हो, तेज़ होगा। मान लिया जाए उसमें कुछ मिक्स किया हो, फ्लो स्लो हो जाएगा। शहद का फ्लो हो, तो उससे भी स्लो हो जाएगा। मतलब जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, फ्लो स्लो होना शुरू हो जाएगा। और माँ से प्लेसेंटा से ऑल के ज़रिए बच्चे को जो खून और ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये आगे का जीवन चलना शुरू हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। कि माँ ने खाया क्या है, माँ की खुराक कैसी है, और उस खुराक को जैसे माँ ने हज़म किया या असिमिलेट किया, बच्चे के लिए पेश किया, वो नॉर्मल है कि नहीं है। उसके एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, उसके वो जो मौसम है, उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली ये ऐसे इनको भी हम कंजेनिटल डिफेक्ट कहेंगे, लेकिन ये इस तरह के डिफेक्ट हैं, जिनका उपचार हम डायग्नोज़ करके कर सकते हैं, जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह की जो बातें हैं, इनको हम इस तरह करेक्ट करेंगे। कि माँ को अगर साल्ट्स पूरे नहीं जा रहे, मिनरल्स पूरे नहीं जा रहे, तो ऑटोमैटिकली फ्लूइड कम भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो फ्लूइड ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब चीज़ों के लिए हमें उस वक़्त ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट के साथ-साथ माँ से जो बच्चे को सप्लाई हो रही है, अब सारी प्रोडक्शन तो उसी की हो रही है ना। बच्चे की डेवलपमेंट जो भी हो रही है, बच्चे के शरीर में जो भी कुछ हो रहा है माँ के पेट में, होता माँ की खुराक से रहा ना। तो इसका मतलब उसको उस वक़्त टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास डिवाइसेज़ आ गई हैं कि हम माँ के पेट में ये चेक कर पाएँ कि फ़ीटस को हाइड्रोसेफ़लस है कि नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि 15 हफ़्ते से की प्रेगनेंसी से लेकर 40 हफ़्ते तक हम इसको, आगे 35 हफ़्ते तक हम इसको आप कह सकते हैं कि हम जज कर सकते हैं, हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि इस बच्चे को हाइड्रोसेफ़लस है।
और अगर जितना जल्दी हमने डायग्नोज़ कर लिया, जितना जल्दी हमने ये जान लिया, उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा कि भाई उसका ट्रीटमेंट कर पाएँगे और उसको करेक्ट कर कर पाएँगे, ताकि जब बच्चा पैदा होने का समय आए, तो उस समय तक ये जो कमियाँ-पेशियाँ दूर हो जाएँ, उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन जब बच्चा अब पैदा हो रहा है, ये 2 बातें आगे-पीछे की। जब बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस वक़्त बर्थ इंजरी हो सकती है। जन्म समय ब्रेन में चोट लग सकती है। ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी में चोट कम लगती है या उस हालात में लगती है जब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो। मीन्स जब बच्चे का सिर नहीं, उसको सेफालिक प्रेज़ेंटेशन बोलते हैं। लेकिन बच्चे की हिप्स जब पंजाबी में उसको बोलते हैं पुट्ठा बच्चा पैदा हो रहा है। हालाँकि सभी पोज़ीशनें हैं, अलग-अलग पोज़ीशनें हैं, लेकिन अगर हिप्स आती हैं, तो उनका डायामीटर सिर से ज़्यादा होता है। उनका घेरा जो सिर से ज़्यादा होता है, जो वहाँ के जनन अंगों से निकलेगा और उस वक़्त संभावनाएँ होती हैं कि कहीं रीढ़ की हड्डी को कोई इंजरी हो सकती है। दूसरी बात, इवन अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोज़ीशन, ऑक्सीपिटो मीन्स खुत्ती जिसको हम बोलते हैं पीछे का हिस्सा और ऑक्सीपिटल हो गया, पोस्टीरियर का मीन्स बैक साइड। अगर बैक साइड का ये जो हिस्सा है हमारा, ये सामने आ रहा है प्रेज़ेंटेशन जो प्रेज़ेंटेशन आ रही है, जो सामने आ रहा है बच्चा पैदा होने के समय, वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोज़ीशन है जो कम से कम डायामीटर की है। और मैंने आपको बताया कि जितनी माएँ पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हो रही हैं या पहली दफ़ा वो माँ बनने जा रही हैं, प्राइमी ग्रेविडा मीन्स पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होना। प्राइमी पारा मीन्स पहली दफ़ा माँ बनने जा रही है वो। और इन हालातों में अगर किसी को हाइड्रोसेफलस हो, तो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो उस हिसाब से बोन्स में इतनी लचक नहीं आ सा पाएगी कि वो उतना डायलेट कर सके। और नॉर्मल डायमेंशन जो है वो मैंने आप सब लोगों को बता दी कि 10 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं कि एक बच्चे का जो सिर है, वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर उसको हाइड्रोसेफलस हुआ, पानी ज़्यादा हुआ सिर में, बोन्स ज़्यादा फैली हुई हैं, तो उस हालात में वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। अगर वो ज़्यादा होगा, तो उस हालात में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही और बच्चे को बर्थ इंजरी भी इसके हो सकती है। हाँ, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो हैं, अगर थोड़ी मात्रा में है, थोड़ा ज़्यादा हाइड्रोसेफलस है, तो उस लिहाज से जो मल्टी में पैरा होती है ना, बार-बार जो जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनको प्रॉब्लम्स कम आती है। उनको तकलीफ से तो डिलीवरी होती है, क्योंकि डिलीवरी की बात आएगी आगे चलकर कि डिलीवरी में कितने घंटे लगने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये सब बातें मैं आप सबको बताऊँगा। लेकिन उनको थोड़ी तकलीफ कम हो जाती है क्योंकि बोन्स की जो प्यूबिक बोन है, जो सामने की हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उनको लचक उन्होंने सीख ली होती है। ये कह लो कि उन्होंने लचक सीख ली है और वो उस वक़्त के हिसाब से ज़्यादा डायलेट होके तो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। और ब्रीच प्रेज़ेंटेशन जब को हिप्स पहले आती हैं, तो अब भी वो मैनेज कर लेती हैं। पहली डिलीवरी अब ब्रीच होगी तो भी मुश्किल होगी, पहली डिलीवरी हाइड्रोसेफलस बेबी की होगी तो भी तकलीफ़ होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हमें पहले जानने के लिए ज़रूरत होती है कि हम पहले जान जाएँ, नहीं तो क्या होगा हेड इंजरी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की इंजरी, वर्टेब्रल कॉलम की इंजरी हो सकती है, स्कोलियोसिस वगैरह हो सकता है, स्पिना बाइफिडा आपने ट्यूमर सा देखा होगा कई बार किसी की रीढ़ की हड्डी के बाद पीछे ना एक ट्यूमर सा उभरा होता है, उसको बोलते हैं स्पिना बाइफिडा। और कई बार स्कोलियोसिस जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है ये। और इस तरह कई जगह से वो बल्ज आउट होनी शुरू हो जाती है कि बोन्स आपस में जुड़ी नहीं है, लेकिन नीचे का प्रेशर बढ़ गया है, वो सेपरेट हो जाएगी। तो इसके मतलब इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो बर्थ के समय में बर्थ इंजरी के कारण ऐसा हो सकता है कि किसी को ऐसा हो जाए। और उसके बाद
और सी बहुत सी कारण हैं जो हाइड्रोसेफलस के हैं, जिनको हम फिर कल आपके लिए डिस्कस करेंगे कि और कौन-सी प्रॉब्लम्स बाकी रह जाती हैं। पंजाबी का प्रोग्राम आज हम नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो प्रवास हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। सो कल को उम्मीद करते हैं कि शायद वो उनका प्रोग्राम हो जाए, तो फिर हम इसी प्रोग्राम को पंजाबी में भी आपके सामने पेश करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो लोग पंजाबी हैं ना, वो बोल चाहे नहीं सकें, लेकिन हिंदी समझते हैं। हिंदी समझने वाले पंजाबी पूरी समझे ना समझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हिंदी बोलने उसको पंजाबी लोग जो हैं वो हिंदी समझ जाते हैं कि क्या-क्या है। तो इसलिए इसकी दोहराई या इसको आगे लेकर जाना कि और कौन-कौन से कारण है जिसके कारण हाइड्रोसेफलस हो सकता है, वो हम आपके साथ कल को डिस्कस करेंगे। आज का समय समाप्त और आज के प्रोग्राम को भी हम यहाँ विराम देते हैं और कल फिर इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। आप सबका रब राखा। मैं आपका हूँ गुरदीप सिंह संधू, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। 7021 विलेज पार्कवे, डबलिन, कैलिफोर्निया 94568 और मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। मेरा फ़ोन नंबर अगेन 4086871899। किसी भी वक़्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहते हैं, कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं या होम्योपैथिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।